Hi guys, hello everyone, this is Saurav here and welcome to another session on the Vedantu VOS channel. This session is in continuation of whatever we discussed in the last session. This is migrations to electron deficient nitrogen. In the previous session we had discussed Beckmann, Neber and Hoffman. We will discuss three mechanisms today. One is Curtius, one is Lossen and one is Schmidt. And they are an extension of Hoffman's rearrangement. क्योंकि इन तीनों rearrangement में isocyanate ही आपको intermediate मिलता है. So चलो, let's start today's session with the first mechanism, which is Curtius rearrangement. Curtius rearrangement is done by using acyl azide. अगर आपने acyl azide लिया है and you are heating it, then you will get a isocyanate. अब इस isocyanate को आप multiple ways में utilize कर सकते हैं, but Curtius reaction is the thermal decomposition of acyl azide. Okay, thermal decomposition of acyl azide to produce an isocyanate. ये काफी इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में जो पाथवे फॉलो होगा वो काफी कुछ हॉफमैन रीअरेंजमेंट से मिलता जुलता है. इट लुक्स लाइक दैट. ओके, सो लेट्स सी हाउ डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस. If I write the mechanism of this reaction, it will go like this: RC double bond O N minus is nitrogen for positive charge. Okay, when you heat it, होता क्या है? The negative charge on the nitrogen delocalizes to oxygen और ये कुछ इस तरह का एक resonating structure create करता है. Okay, and then this comes over here, this goes over here, and this goes out. So 1, 2, and 3, which results in the formation of R, N, double bond C, double bond O. Okay, काफी आसान सा रिएक्शन है. हमें ये जानना होता है कि ये बनता कहां से. This gets created if you take acyl halide and you react it with NaN3. N3 minus is a nucleophile और ये रिएक्शन इस तरह से एक acyl azide को क्रिएट कर देता है. So once you've gotten your isocyanate, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. So first, R N double bond C double bond O को आप वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हो. ओके, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास होगा क्या? कुछ इस तरह का एक कंपाउंड निकल के आएगा, R N minus C OH2 plus. एक इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, IMPT. IMPT is intramolecular proton transfer. You will get RNH COH double bond O, and फिर और एक बारी रिएक्शन होगा. Okay, at this juncture you will get NH minus plus HO C double bond O OH2 plus, and there will be again a H plus transfer, and you will get RNH2 plus H2CO3. This H2CO3 is not that quite a stable acid,
So this will decompose to give carbon dioxide plus water. But what you have observed is you can create an amine out of it. So this is exactly this looks very much like an extension of a Hofmann rearrangement, Hofmann bromide reaction, in which an isocyanate was being converted in the second step to an amine. Okay. Now it does not depend on the nature of the alkyl group, whether you take alkyl, whether you take hydrogen, whether you take aryl group. This conversion would take place. Okay, let's look at what other things we can do with Curtius rearrangement. So if you take RNCO, the isocyanate, with another amine, then this will attack on the carbon. You would get R N minus C NH2R double bond O, and there will be a positive charge, and we will have a IMPT. To generate this. Okay. So this looks very much like a alkyl substituted यूरिया. देखिए ये यूरिया इज लाइक दिस. आपने क्या किया कि जहां पे हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को हटा के वहां पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया. ओके. थर्ड, if you take R N double bond C double bond O and you react it with an alcohol, I'm skipping the IMPT part, I'm directly writing the product. You will get RNH C double bond O O R. This is known as a carbamate. Okay. This is known as a carbamate. Now, it is imperative to know that अगर आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, CPH MEH and double bond ON3, if you heat this and let's say the absolute configuration is S, okay, the absolute configuration is S. In such a case, what you will observe is the absolute configuration will stay as it is. Okay? मान ली हीट, पहले स्टेप में हीट, सेकंड स्टेप में आपने वाटर यूज किया, so it will still be S. So migrating groups, जैसे in case of Hofmann bromide reaction, we have observed that the migrating group, the stereochemistry does not change because it is an intramolecular reaction. Therefore, over here the same principle is being followed. What we need to also be aware of the fact is that we will never ever obtain a crossover product in this case. Okay? Will not obtain a crossover product in this case. Chalo. Let's move on to Lossen rearrangement. Now Lossen rearrangement, Curtius कुछ बच्चों को आता भी है, लेकिन Lossen rearrangement में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. What is Lossen rearrangement? Lossen rearrangement says that when the oxygen acyl derivatives
of hydroxamic acid. So what is the hydroxamic acid? RCONHOH. RC double bond O NHOH. If O-acyl derivative of hydroxamic acid, O-acyl का मतलब ये ऑक्सीजन को आपने किसी एसाइल ग्रुप के साथ लगा दिया है. एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? इसे यहां पे RC double bond O. That is an acyl group. वो कैसे आप लगाओगे? That's a different thing altogether. But if you attach it to a acyl group and you treat it with base or just by heating, you will get a isocyanate. उसको water के साथ treat करने पे 1 degree अमीन मिलता है. This is known as Lossen rearrangement. ये देखने में वैसा ही लग रहा है कि जो हमने कर्टियस में देखा, जो हमने हॉफमैन ब्रोमाइड में देखा. चलो देखते हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर दिस O-acyl डेरिवेटिव. ओके, सो O-acyl डेरिवेटिव बनाना डिफिकल्ट नहीं है. O-acyl डेरिवेटिव बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू टेक दिस. सो मान लेते हैं कि आपके पास एक हाइड्रोक्सामिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O NHOH. इसको आप RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ ट्रीट कर सकते हो, R', या फिर आप इसको ट्रीट कर सकते हो R' C डबल बॉन्ड O R के साथ. This will be a preferred reagent because Cl is a good leaving group. इन दोनों केस में एक substitution reaction होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, this will go out. Same happens over here, and you will be getting RC double bond O NHO C double bond O R'. ठीक है. अब ये रिएक्शन होता किस तरह से? It's a very simple reaction. So आपने क्या किया कि RC डबल बॉन्ड O NHO C डबल बॉन्ड O R' लिया है. And this comes over here. तो ये OH माइनस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. This proton will be abstracted and the electrons come over here. This will move to nitrogen and this whole thing will go out. So 1, 2 and 3. You will end up getting R N double bond C double bond O, and you will get R' C double bond O minus. Okay, this is how the reaction takes place. Okay, it's pretty simple. Isocyanate से आगे चीजों कन्वर्ट करना काफी इजी है. मतलब आइसोसाइनेट को यू कैन रिएक्ट इट विथ मल्टीट्यूड ऑफ रिएजेंट्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं. आप इसको अमीन के साथ रिएक्शन करा सकते हो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा सकते हो, आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हो. तो वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा? अमीन मिल जाएगा. इफ यू रिएक्टेड विथ RNH2 तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिल जाएगा. इफ यू रिएक्टेड विथ अल्कोहल देन यू विल बी गेटिंग अ कार्बामेट. सो द सेम रिएक्शन कीप्स गेटिंग रिपीटेड. Okay, the same reaction keeps getting repeated. इसमें यह भी आपको याद रखना है कि the stereochemistry of the migrating group does not change. Doesn't change. And what else? It is an intramolecular
reaction or rearrangement. So crossover products are not found. ठीक है, ये हो गया लॉसन. लास्ट हो जाता है श्मिट रिएक्शन. श्मिट रिएक्शन भी काफी सिंपल सा रिएक्शन है. आप इसको कर, what are you doing in this case is that you are using a carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन में कन्वर्ट करने का एक मेथड है. So what you do is you take carboxylic acid and you react it with hydrogen azide. This compound is known as hydrogen azide. In presence of H2SO4, this H2SO4 is taken in concentrated condition and you get amine CO2 N2. काफी feasible सा reaction है because these two products are will go out as gases. Carboxylic acid, when is converted to this primary amine, remember that it is one carbon short. जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये CO2 बनके निकल गया. Therefore, total number of carbon atoms parent carboxylic acid से एक कम रहेंगे. So मान लेते हैं कि अगर हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया है, then propanoic acid contains 3 carbon atoms, so and that is subjected to Schmidt rearrangement, then it will contain 2 carbon atoms and NH2 when reaction gets over. What is the mechanism of this reaction? So it looks difficult but it is not, okay, because the reason is ये काफी NHN3 हम लोग देखते नहीं है in usual cases, but it's not a very difficult reagent to interpret. So what will happen is this: you start with a carboxylic acid and you react it with H+. आपके पास ये मिल जाएगा. Okay, a protonated form of it. Next, what you do is you react it with hydrogen azide. So इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर नेगेटिव रहता है. तो ये नेगेटिव जिस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो यहां पे अटैक करेगा. Okay, and this will move. You will get RCOH OH NH you'll get this. Okay, now at this stage, you have this species. Perfect. You have this species. अब यहां पे ये चीज इधर आती है और ये बाहर निकल जाता है, and you get RCOH double bond N triple bond N plus. Okay, perfect. You can now move to create this RC double bond O NH, क्योंकि ये टॉटमराइज कर जाएगा. आप समझ लीजिए, टॉटमराइज कर जाएगा. N2 plus. This will come over here. This will come over here and this will go out. और आपके पास ये R N H
डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट विल बी रिमूव्ड इवेंचुअली. आप एक H प्लस हटा देंगे, यू विल गेट RN डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O. अब इसको वाटर के साथ अगर आपने ट्रीट किया, ओके, इफ यू ट्रीट दिस विथ वाटर, you will get RNH2. So it's a pretty simple reaction. कुछ और केसेस हम लोग पढ़ते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट Schmidt reaction, but we do read the reaction of hydrogen azide with some other compounds as well. कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा. Let's look at that. If you take an aldehyde and you take HN3 under the same condition, okay, please remember you will get RCN plus R NH C double bond O H plus N2. So या तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है. Similarly, if you take RC double bond OR plus HN3, you will get RC double bond O NH plus N2. Okay. Please remember that इसमें भी सेम रूल सेट ही फॉलो होता है, that the migrating group should always have a retention of the configuration post migration. ठीक है. So let's look at some problems. ये जो दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, ऑक्सीन, और ये भी ऑक्सीन है. हमें आउटकम बताना है कि व्हाट विल बी फाउंड. सो अब देख रहे हो H प्लस दिया गया है. सो व्हाट विल फर्स्ट हैपन इज दिस विल फॉर्म NOH2 प्लस. When this goes out, this will come over here. Okay, and you will get something like this. Sorry. I would get this, and this point will have a positive charge. इस कारण positive charge आ जाएगा. And then if I treat it with H2O and I lose H plus, then I would be getting something like this. I would be getting something like this. ठीक है. इसको हम बोलते हैं लैक्टम. लैक्टम्स आर साइक्लिक एमाइड्स. ओके, ये वाला केस देखते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ H प्लस, सो वन ऑफ द ग्रुप्स विल माइग्रेट. अब ये जो ग्रुप है ये इसके एंटी है, इस बॉन्ड के एंटी है. सो if we were to write it like this,
So this will migrate, this will go out. Perfect. बट ये पूरा का पूरा माइग्रेट यहां पे करने की जगह it actually, so what will happen is the ring will become so weird कि this compound in fact undergoes a slightly different outcome. Okay, it undergoes a slightly different outcome. So this comes over here, this goes out और ये bond break कर जाता है, and what you get is 1 2 3 4 5, एक 5 membered ring इस तरह का. ओके, मान लेते हैं 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 आप लिख लीजिए. 2 और 5 के बीच में एक ब्रिज है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है. ओके, एंड 2 से लगे हुए आपको एक C ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाएगा. ओके, क्लियर. और यहां पे and at 5 there was a methyl group. Perfect. Now since the bond has been broken at 5, so 5 will get a positive charge. तो क्या करोगी, 1 you remove a proton from here and you open this. Just थोड़ा सा messy हो गया है. Let me just draw this once again. Yeah. So we will be getting something like this. इस तरह का आएगा. C N बन जाएगा यहाँ पे, and we will have ME, 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 and there will be a positive charge here. आप एक प्रोटॉन यहां से हटाइए from here and you create a double bond. So you would be getting something like this. ME, ME, ME double bond, and over here CH2, CN. So this will be formed. So that's all for today, guys. I hope you enjoyed today's session, and in the next session what we will be doing is migration to electron deficient carbon. So हमने deficient oxygen पे migrations पढ़ लिए हैं, deficient nitrogen पे पढ़ लिए हैं, and then we will study migration to electron deficient carbon. So that's all for today. This is Saurav Goswami signing off.